पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। हेड एंड नेक में 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं। सीलियरी, टेरिगोपैलेटाइन, ओटिक एंड द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। इनका एक स्पेशल फीचर होता है, ईच गैंग्लियन हैज 2 नर्व्स रिलेटेड टू इट। पहली होती है टोपोग्राफिक नर्व। टोपोग्राफिक नर्व को हम मॉर्फोलॉजिकल नर्व भी बोल सकते हैं एंड दिस इज द नर्व विच डज नॉट रिले इन द गैंग्लियन। मतलब ये गैंग्लियन के अंदर एंटर करेगी और बाहर निकल जाएगी, बट गैंग्लियन में रिले नहीं करेगी। सेकेंड नर्व रिलेटेड टू अ गैंग्लियन इज द फंक्शनल नर्व। Now this nerve relays in the ganglion. इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझ लेते हैं। This is a ganglion. Now this is a topographic nerve or morphological nerve which enters in the ganglion and comes out of it without relaying in the ganglion. And the functional nerve enters the ganglion, relays in it, and the topographic nerve, that is this blue part, this topographic nerve carries the postganglionic fibers of the functional nerve. Functional nerve are the parasympathetic nerves, that is cranial nerves 3, 7, 9 and 10. Now a special feature to note here is all postganglionic fibers are branches of trigeminal nerve. This is why ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ने से पहले हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस के बारे में पढ़ा, क्योंकि जितने भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये वाले, ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस होती हैं। This means that all the parasympathetic ganglions of head and neck are topographically related to the trigeminal nerve. अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व है एंड इट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व्स। इट इज अ नर्व आर्च, मतलब जो स्ट्रक्चर्स फर्स्ट फैरेंजियल आर्च से डिराइव होते हैं उनको ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। Now, this nerve has 3 branches. The first branch is ophthalmic branch or ophthalmic division. It is a purely sensory branch. It carries sensory fibers from the structures derived from frontonasal process. Second is maxillary branch. This is also a purely sensory branch and it carries sensory fibers from the structures derived from the maxillary process. The third or the largest branch is the mandibular branch. Mandibular branch is a mixed branch. It has both sensory and motor fibers. Sensory fibers are taken from the structures derived from mandibular process.
The motor fibers supply total 8 muscles, of which 4 muscles are of mastication and there are 4 other muscles. अब हम लोग देख लेते हैं ट्राइजेमाइनल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स. फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब ब्रेन स्टेम के वो कॉलम्स जिसमें ट्राइजेमाइनल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स आते हैं. फर्स्ट इज जनरल सोमैटिक एफरेंट. इसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. mesencephalic न्यूक्लियस, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस. प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस को चीफ सेंसरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं. एंड द थर्ड इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. सेकेंड कॉलम हमारा होता है स्पेशल विसरल इफरेंट. इसको ब्रेंकियल इफरेंट कॉलम भी बोलते हैं. इसमें होता है मोटर न्यूक्लियस. अब इन न्यूक्लियाई को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. तो mesencephalic nucleus is the nucleus which extends in the midbrain. It receives proprioceptive sensations from the muscles of mastication, teeth, and the temporomandibular joint. The proprioceptive neurons are unipolar and their cell bodies are located in the mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. They are not present in the trigeminal ganglion. Also, a special feature to note here is mesencephalic nucleus is the only site in CNS which contains unipolar neurons or first order sensory neurons. The second is principal sensory nucleus or the chief sensory nucleus. It is present in the pons. The fibers carrying sensations of touch and pressure relay in this nucleus. The third nucleus is spinal nucleus, which extends in the spinal cord. Fibers carrying sensations of pain and temperature from most of the area of face relay here. Now the extraceptive neurons, that is of touch, pressure, pain and temperature, are pseudo-unipolar and their cell bodies are present in the trigeminal ganglion itself. They are not present in the brainstem. Second column was special visceral efferent. It has the motor nucleus. Now the motor nucleus is present at the level of upper pons. तो ट्राइजेमाइनल नर्व के 2 कंपोनेंट्स हुए, सेंसरी कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट. सेंसरी कंपोनेंट मतलब सेंसरी फाइबर्स के सेंट्रल प्रोसेसेस. अब इसमें जो असेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो प्रिंसिपल न्यूक्लियस पे जाते हैं एंड दीज कैरी द सेंसेशंस ऑफ टच एंड प्रेशर. और जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो स्पाइनल न्यूक्लियस में जाते हैं एंड दीज कैरी द सेंसेशंस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. अब प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन को बाईपास कर देते हैं और मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस में रिले करते हैं यूनिपोलर सेल्स में. द axons from spinal nucleus and the principal nucleus together with central processes from the mesencephalic nucleus make the trigeminal lemniscus. They cross to the opposite side and then they ascend as the trigeminal lemniscus. This trigeminal lemniscus ends in ventral posteromedial nucleus of thalamus, and from here third order neurons reach to the area 3, 1 and 2, that is primary sensory areas of cerebral cortex. The motor component of trigeminal nerve receives impulses from right and left cerebral cortex, red nucleus and the mesencephalic nucleus. This is the first part of the video. Second part में हम लोग trigeminal nerve के branches discuss करेंगे.
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं।